Assalamu alaikum, Dr. Usman Walaikum and assalam. Dr. Numan Tasneem. Can you hear me? Yes. Okay. So let's begin the session. For the first scenario, Dr. Usman, a 45-year female patient has been referred to you in your clinic uh, by the medical specialist. Her ultrasound was done for the upper for the dyspepsia, and the ultrasound abdomen revealed there's a right-sided there's a suspicion of the mass in the right adrenal gland. So how will you approach this patient? Okay. First of all, I would take a thorough history from the patient regarding dyspepsia. What was the relationship of this epigastric pain to the food? Is it increasing or decreasing with the food? I will also ask about her generalized condition, whether she has any abdominal pain, any change in the urinary or bowel habits, any history of menstrual irregularity, and I would also like to examine her. I would also try to know whether she is having any weakness or any history of weight loss, any history of bleeding per rectum, any constitutional symptoms, and I would like to see the report of ultrasound that this mass in the adrenal region is. I would like to classify whether on the history she has weight gain or weight loss, and she has uh, any history of diabetes mellitus, uncontrolled diabetes, any history of previous drugs she has been taking, any history of family history of any chronic illness, and any previous operative condition, any previous operation she has underwent. And then I would examine the patient, general physical examination of the patient, overall look of the patient, her vital signs, blood pressure, pulse, and her respiratory rate. I would like to do general baseline investigation along with electrolytes, and would like to know whether she has any symptoms or not. Asymptomatic, except for the dyspepsia. Otherwise, she is asymptomatic. Okay, she has a dyspepsia has been controlled with proton pump inhibitor. What medicine she is taking with for the PPI, dyspepsia? she is taking PPI. Okay, then I would like to do because she has a mass in the adrenal gland. I would like to know what is the character of the mass. I would do CT scan of the abdomen with the adrenal protocol and see whether this mass is what is the So size of the mass. what will you advise for the CT scan? Will it be with contrast, without contrast? Yes, it will be a contrast and a CT scan with the IV contrast. And I would like to know whether this mass is So what is okay, the size of the mass, what is the Hounsfield unit for the mass, and what is whether it is invading local or it is invading surrounding structures. okay. The Hounsfield unit density is it is 9, and the size of this lesion is 3 centimeter. It is in the right adrenal gland. Okay, There is right adrenal no gland. local invasions. Okay, then I would like to see whether she has. I would do complete metabolic pro and hormonal profile of the patient to see whether this mass is uh, hormonally active or not. I would like to do serum cortisol level. I would like to do serum metanephrine level. I would like to do renin and renin aldosterone ratio and dexamethasone suppression test to see whether this adrenal mass is functional or non-functional, whether it is causing some symptoms to the patient or not, except dyspepsia. Is she having any gain or weight loss? Is she any history of any weight gain, uncontrolled hypertension, or uncontrolled diabetes? Uh, Advising the aldosterone and renin ratio, what will you advise to the patient? I will if Any she has specific advice? if she has been taking any antihypertensive drugs like ACE inhibitors or angiotensin receptor blocker, they should be stopped 2 weeks before the test. Okay, so the aldosterone and renin ratio, it is 400. Okay, then it means that it is non-significant because less than 8 centimeter 100. So it means that it is incidentaloma,
and it is picked up because majority of the adrenal tumors, they are picked up routine investigation for other conditions, and it is causing no symptoms, so we can do not need to Make operate it upon a it. 900. Yes. Make it a Okay. 900. If it is a 900, then we can see whether patient has uncontrolled. It can be from the adenoma in the adrenal gland, or cone adenoma. So we can see whether she is hypertensive. Then we will treat it, because persistent if she has hypertension and it is controlled with medication, then it's fine. If it is not controlled with medication, then we have to operate upon this tumor. But size of the tumor, because it is small, so, and it is a uh, if it is causing hypertension and complications along with hypokalemia, then we have to operate it. So if it's a single tumor and you are not going to operate upon it, if the symptoms are controlled with the medications, so you are not going to operate upon this patient. Yes, if because size of tumor is small and hypertension is controlled with medication, then we can follow the tumor. If its size Okay. is increases, Okay. Suppose the patient is hypertensive and she needs to continue with the medications. So then what will you do? so then we can make a multidisciplinary MDT meeting, that whether she really need surgery, and if the decision of MDT is surgery, then we can pre-operatively prepare the patient, and we can then do adrenalectomy if it is causing On which side? complications. On which side? Because Right. How will you go for the laparoscopic open? yes, I would go for a laparoscopic adrenalectomy, because tumor size is small, and it is not any malignant tumor, Okay. so we can So, do it. okay. What will be the patient position and what will the port placement? Tumor is on the right side, Yeah. so we have to on the right side, patient position will be right up, and I will do transperitoneal laparoscopic Position right adrenalectomy. up, and how will the right up, right? Then how will you skewer the uh, patient on the table? and it is uh, table will be broken. Table will be broken, and then I will tie the patient, Okay. and Okay. So then what will be the the port four port. placement? Where will you place the port? I have uh, I will follow the baseball diamond approach, and Okay. one port, and I will place four ports. One port in umbilicus, other port in right iliac fossa, and third That will port in be for some. epigastric region. Yes, Okay. and third port is in epigastric region on the right side, Epigastric and region. Okay. yes, So the and epigastric umbilicus, radial fossa, and fourth one, and fourth one in right subcostal region. right soft costal. Do you think your right iliac fossa port will be able to reach this adrenals? Hello? Hello? So video is stuck. So do you think your right iliac fossa port will be able to reach the adrenal? No, it will be not exactly in right iliac fossa. It will be more on right lumbar region, Right and lumbar region. Okay. Okay. yes. So then what, once you have created the pneumoperitoneum, you have placed the ports, what will your next step? Then I will first of all elevate the liver up towards the head side of the patient, How will you and elevate the liver? I would elevate the liver with a fan retractor. You will retract the liver, right? Then Yes, I would retract the liver, and then I will start dissection uh, on the lateral border of between the gland and liver, on the lateral border of the IVC. I will divide the peritoneum, and then I will remove the peritoneum to expose the gland on the
lateral side of inferior vena cava. I divide right triangular ligament, and then I will identify right renal vein, which is small and draining into the right IVC, and then I will make space and clip the. I will Yes. Okay, splenectomy has been done. Now, Okay, postoperatively, the patient comes back to you sir, after you are not audible. You are not audible, please. splenectomy has been done. So the Okay. patient has been discharged. The patient after 3 months with the hypertension, so she's having that you need to take the medications. What could be the cause? Okay, then patient is after endolectomy, she is still hypertensive. Then Yes. I will reassess what is the reason. I will see baselines, see electrolytes, sodium, potassium. I will there can be another adrenal tumor on the left side, and there can be some other pathology that is causing hypertension. I would complete workup regarding hypertension. The patient might have because she has history of hyperparathyroidism. She has dyspepsia, so she can have hyperparathyroidism, or she can have uh, renal artery stenosis. And uh, I would like to see that what is the cause of the hypertension. Okay, thank you. Sir Numan, हाँ sir, can you add a comment on it? ठीक था यार, मतलब अच्छा गया इसमें, कोई ऐसा अ, ठीक था मेरे ख्याल में, कोई ऐसी बात नहीं पकड़ी मैंने। अच्छा, तो इसमें है उस्मान, व्हाट डू यू थिंक? सर, इसमें एक तो मुझे ना, मेरा ये ख्याल है कि एग्जाम में ना मुझे ओपन एड्रेनलेक्टमी की तरफ ज्यादा तवज्जो करनी चाहिए, व्हाई? क्योंकि मेरा अपना ये ख्याल है कि इसमें ना मुझे, अगर मैं इसमें ओपन की तरफ जाऊं ना, और मैं जो है ना उसको ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकता हूँ इंस्टेड के मैं जो है ना ये लेप्रोस्कोपिक को, क्योंकि लेप्रोस्कोप Why में ना for this? No, why? No, the examiner will ask you why for 3 centimeter adrenal mass you are opening up. Why are going for the ये open adrenal? अब उसको फिर या तो मैं ये जवाब दे दूं कि जो है आई विल रेफर द पेशेंट टू हायर सेंटर, Okay. या अ, मतलब इसमें, और वी कैन टेक द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सर्जन, या बेसिकली तो ये यूरोलॉजिस्ट से ज्यादा करते हैं ना हम्म, ये एड्रेनलेक्टमीज जो है, हाँ, ठीक है। तो आई कैन टेक हेल्प ऑफ यूरोलॉजिस्ट, ये कह सकते हैं। मैं तो कोई साथ में खोला हुआ है तो चीजें पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बाद में उसकी देख ना लेना, बाद में देख लेना। अच्छा। देखो आप जस्ट, अब ये मेरा टाइम है ना, आप हम्म, इफ यू वांट, नहीं तो फिर नेक्स्ट हम सिनेरियो पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ठीक हो गया जी, और कोई चीज? अच्छा, आप इसको जरा दोबारा एलेबोरेट करें थोड़ा सा, कि जो पोर्ट प्लेसमेंट है इसकी दोबारा जरा रिवाइज Even करेंगे हम। before the port placement, आप देखें, I gave the scenario. So this हम्म, patient has been referred to you after having ultrasound. So ultrasound shows the adrenal mass, हम्म, right? ये क्लियर कट आपको बता दिया। अब हम्म, बता दिया तो नो, आपके एड्रिनल मास से क्या हो सकता है? व्हाट आर द पॉसिबिलिटी? इट कुड बी इंसिडेंटलोमा, या आपके किसी हम्म, अल्ट्रासाउंड की वजह से, या इट कुड बी फंक्शनिंग ट्यूमर, फंक्शनिंग हो सकता है कोई भी। इट कुड बी कुशिंग सिंड्रोम, पोन्स, फियोक्रोमोसाइटोमा, और इट कुड बी लिग्नेंट हम्म, एड्रीनोकार्टिकल कार्सिनोमा, इट कुड बी मेट्स। ठीक है, अब इन चीजों को माइंड में रखते हुए यू स्टार्ट अप विद हिस्ट्री, ये आपके हैं और इनके ऊपर आपने सिम्टम्स इससे पूछने हैं। ठीक है, तो जब आपने पहले हम्म, स्टार्ट पे ये अपने माइंड में यही चीज, तो हिस्ट्री भी आपकी उसी साथ होगी। आई विल आस्क द पेशेंट, ये भी ask the patient about the whether the patient having any signs and symptoms suggestive of Cushing syndrome, Pons, भाई इतना ही बोल दे, फियोक्रोमोसाइटोमा, एनी malignancies, भाई ये बोल देंगे, बस इतना ही बहुत सफिशिएंट है। अब आगे हम्म, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंडेंट है, बड़ी दिक्कत से आ रही है बात ना। तो अब एग्जामिनर के ऊपर है कि वो आपसे मजीद पूछता है। ठीक है, हम्म, आप उसके वो चले जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल था कि ये स्टार्ट पे इधर रखते, फिर तो मैंने फर्स्ट स्टेप इज टू
have the biochemical diagnosis. Then comes the Yes. localization. तो आपने पहले क्या था biochemical, आपने देखा contrast and CT scan करवाया. So without Hmm. knowing that it's a pheochromocytoma, if you give the contrast, contrast can precipitate the pheochromocytoma. जो practice में patient can develop hypertension. ठीक है. पहले Okay. हमने क्या करना biochemical diagnosis. आप इसके अंदर जिसका आपने बताया सारा, you will get your aldosterone level, renin, then the need to see the potassium level as well, sodium and potassium, serum cortisol, dexamethasone, 1 milligram dexamethasone suppression test for this pheochromocytoma, plasma metanephrine, urinary metanephrine. आप इनके जस्ट आपने मेंशन करना है इनके सबके, ठीक है, मेंशन किया. आप उसमें देखेंगे अब आ गई आपके पास रेशियो आ गई, फिर एल्डोस्टेरॉन टू रेनिन रेशियो इज मार्केटली रेज्ड, दैट मींस इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड द aldosteronism. One, you Aldosteronism. have established the diagnosis. If the patient is symptomatic, for example, इसमें तो hypertension उस तरह से नहीं थी, so you need to Hmm. medical control, वो आपने करना है, you Yes. get the control. हाँ Then जी. you go for the localization. तो उसमें आपने कराया, आपने हमारा अपना CT scan कराया. Hmm. अब एज इसमें देखें, if it's aldosteronism, right? तो उसमें अगर 35 से एज ज्यादा है तो आपके एड्रिनल वेन सैंपलिंग भी है. रीजन ये है कि अगर बायलैटरल हाइपरप्लेजिया है तो उसमें से यू आर नॉट गोइंग फॉर द सर्जरी, द स्पाइनल इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टिव ट्रीटमेंट, Hmm. and then you will not go. तो आपने ये, you need to be very sure it is the unilateral, not the bilateral Hmm. disease. If it's a bilateral hyperplasia, आपके क्या causes होते हैं? It's aldosteronism, it could be Hmm. hyperplasia, could be Cohen syndrome, it could be a Hmm. carcinoma. आपने Carcinoma. इसके अंदर पे जाना है कि ये किसके अंदर फॉल कर रहा है, ये यूनिलैटरल Hmm. है या बायलैटरल डिजीज है. ठीक है. इफ इट्स अ यूनिलैटरल डिजीज तो फिर तो आपने सर्जरी की तरफ जाना है. बायलैटरल देन नो, इट्स अ मेडिकल Hmm. ट्रीटमेंट. ठीक है. तो आपने ये एस्टेब्लिश करना है. फॉर एग्जांपल सीटी कराया, उसमें आप देखें एग्जामिनर से पूछते हैं कि कंट्रालैटरल इसका एड्रिनल कैसा है, क्योंकि आपने Hmm. मुझसे पूछा नहीं था, इसलिए मैंने Hmm. परसिस्टेंट उसको दे दी है कि बाद में फिर Hmm. हाइपरटेंशन है उसको जी. Hmm. तो दूसरी तरफ भी एड्रिनल की क्या सूरत हाल है, तो Hmm. ये जरूर उसमें मेंशन हमने करना. ठीक है. बाकी मूविंग ऑन टू द एड्रिनलेक्टमी. सो in this 3 centimeter tumor, small tumor less than 6 centimeter, so the standard treatment is the laparoscopic adrenalectomy. Hmm. ओपन नहीं है, वो इंडिकेशन होगी द पोर ओपन की. जस्ट आपने कहा कि यू विल इन्वॉल्व, Hmm. आई विल इन्वॉल्व द एंडोक्राइन सर्जन, यूरोलॉजिस्ट और अदर सर्जन हु हैज advanced skill in performing this kind of this surgery. I have less experience in doing this the surgery. Now it depends upon the examiner. He may ask you the laparoscopy, what are the port Hmm. placement, मोटी मोटी आपकी चीजें जो होती हैं वो कहाँ Hmm. पे पोर्ट प्लेसमेंट इसकी कहाँ पे होगी. आपको वो बिल्कुल आपने लेटर डिक्यूबिटस होगा बीच में टेबल को, यू ब्रेक द टेबल एंड यू Hmm. नीड टू स्ट्रैप द टेबल पेशेंट लेग के Hmm. ऊपर, थाई के ऊपर, पेल्विस पे और ऊपर चेस्ट पे. ठीक है. और Hmm. जस्ट लाइक जो रीनल नहीं होती पोजीशन, हाँ निफ्रेक्टमी की जी. पोजीशन, Hmm. उस पोजीशन में पेशेंट होगा. ठीक है. उसके बाद पोर्ट प्लेसमेंट क्या होगी, आपकी सारे के सारे ऑलमोस्ट पोर्ट जो है ना वो कोस्टल जो है ना मार्जिन, सब कोस्टल Hmm. वहां पे आएंगे. ठीक है. आप एक जस्ट अबव द अम्बिलिकस टू ऑन द राइट साइड, एक तरफ आपको मिड लाइन की एक तरफ हो जाएंगे. ठीक है. Hmm. बाकी आप क्या एक आ गया पोस्टीरियर लिमिट है, पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन और मिड क्लेविकुलर लाइन, ये सारे आएंगे सब कोस्टल रीजन में आएंगे, कोस्टल मार्जिन को मार्क Okay. करेंगे. और बीच में जो डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट वो कितना होना चाहिए, 5 6 to centimeter. 7, एटलीस्ट 5-7 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, अदरवाइज द पोर्ट विल कोलाइड. सही. और राइट इले 4-7 डालेंगे तो आपका पोर्ट तो वो तो पहुंचेगी नहीं ऊपर, इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंचेगा. ठीक है. तो अब जब आपने कर लिया, वंस यू हैव एंटर क्रिएटेड द pneumoperitoneum, तो आपका फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड द ट्रायंगुलर लिगामेंट, नीड टू रिट्रैक्ट द लिवर. तो जस्ट अंडरनीथ द लेटरल टू द गॉलब्लैडर. ठीक है. वहां से आपने क्या करना है, उसको ट्रायंगुलर लिगामेंट को डिवाइड करेंगे. नीचे आपके जिरोटा फेशिया विल ओपन अप. आपका मीडियल डिसेक्शन के लिए आप आएंगे, उसमें आप जो विल आइडेंटिफाई द एड्रिनल वेन. ठीक है. और उस वक्त Okay. आपने क्या करना है, यू नीड टू इन्फॉर्म द एनेस्थेटिस्ट. Yeah, I'm going to ligate this adrenal vein. Medial dissection, then inferior dissection, then lateral, Hmm. then the superior dissection. ठीक है. सही. तो ये लेकिन ये मोटी मोटी चीजें तो पता होनी चाहिए. वो बाकी Right. एग्जामिनर जो है वो पूछ तो सकता है कि आपके ये क्या क्या होंगे. पर मेरा Hmm. मेन इसमें पॉइंट ये था कि जो एल्डोस्टेरोनिज्म है ना, अगर बायलैटरल Yeah. डिजीज है तो ट्रीटमेंट इज स्पाइरोलेक्टोन, उसकी बड़ी हाँ जी. इफेक्टिव ट्रीटमेंट है. ठीक है. और यूनिलैटरल है और आपने हाँ जी. कॉन्फिडेंटली उसको डायग्नोज के इमेजिंग को डेमोन्स्ट्रेट करी, एज लेस देन 35, तो फिर एड्रिनल वेन सैंपलिंग की जरूरत नहीं है. अगर एज इज मोर देन 35, सीटी इज नेगेटिव,
ठीक है। और उसके अंदर फिर आप वो करवाएंगे एड्रिनल वेन सैंपलिंग, या बायलैटरल हाइपरप्लेजिया आपको आ रहा है, बल्कि डिजीज आ रही है, उसमें एड्रिनल वेन सैंपलिंग, ताकि हमें पता है किस तरफ की डोमिनेंट है, जिस तरफ की डोमिनेंट उस तरफ की एड्रिनलेक्टमी करेंगे। और अगेन पेशेंट विल बी टेकन इनटू द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। जी। ठीक हो गया। तो एनी अदर थिंग? सनुमान। और ऑब्वियसली जिस तरह से बात करें, ये एग्जाम इतना टाइम नहीं होगा वहां पे, वो 5 मिनट का तो सिनेरियो होना है, हम्म, इतना लंबा टाइम नहीं होना कि इतनी ज्यादा। ये तो हम वैसे चूंकि प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए इसको डेप्थ में जरा वो कर रहे हैं कि सारी चीजें जितनी हम कवर कर सकते हैं। और अच्छा कुछ चीज चलेंगे। ऐड करनी है तो? हाँ नहीं बस अभी तो मेरा ख्याल है इसमें तो और हाँ जो है ना नहीं है जरूरत एडिशन की। ठीक है। तो मैं पूछूं। हाँ हाँ नुमान, आर यू रेडी? एंडी, रेडी? उस्मान इज एग्जामिनर। सर नुमान, आर यू रेडी? ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करें। ओके, गो अहेड। Dr. Noman, you have a 35-year-old female presented to you with on and off episodes of sudden weakness, sweating, palpitation, and headache. She has been taking these symptoms relieved with taking food. How would you proceed with this case? Okay, first of all, I would like to take thorough history of this of her complaints. She is having weakness and palpitations. I would ask of any weight loss and how long is she having these symptoms, and the palpitations, are they occurring frequently? How many episodes per day or per week? And She regarding has a history of becoming whenever she has long fasting and she does not take meal, develop these symptoms. okay. And regarding her headache, is she having headaches along with these symptoms, or it is a separate symptom? And It which occurs along with these symptoms. okay. So I would like to ask any other complaints, like any pain in abdomen, or any urinary or bowel complaints, or any vomiting, or any allergy to anything, any food item, or No, any she does not have any allergy or abdominal complaints. and any past history of any significant disease or comorbids or any surgery. She has been previously admitted on and off with the same symptoms, and to local doctor they give him IV fluids and dextrose, and it improves. Okay. So I would like to then examine the patient. I would like to examine her vital signs, her general physical examination, and then I would like to examine her abdomen and her chest and her cardiovascular system as well. And I would specifically see for any in chest for any added sounds, in heart for the heart sounds. Cardiovascular system is normal, and on a routine investigation, she has episodes of severe hypoglycemia on and off. Okay, so my Her blood sugar drops to 60 okay, so now milligram. my concern would be to find the cause of why she's having hypoglycemic episodes, and she has no previous comorbids, no diabetes or any other history. So I would my provisional diagnosis would be an insulinoma, that she is having raised levels of insulin, which is causing these symptoms. So I will Okay, how would you investigate this insulinoma? would like to investigate. I would do baseline investigation. Along with that, in lab, I would like to see, I think, the C peptide levels, which are the breakdown product of insulin. And on imaging, I would like to get first an ultrasound abdomen and chest X-ray, and followed by CT scan with IV and oral contrast to see any tumor, this tumor producing insulin in the pancreatic region.
Okay, the CT scan reveals there are multiple nodules in pancreas of variable size. And how would you know, come to know that which tumor is causing symptoms? So there are multiple nodules, uh, and I would also confirm the diagnosis by admitting her and observing her for these hypoglycemic episodes, and during the episode measuring her sugar levels during such an attack, and along with comparing them with the imaging findings, uh, the diagnosis of insulinoma will be confirmed. And I would like to know that which area of pancreas has the nodules. Is it the head or neck, or which area which is having the It is nodules? in the tail area, Okay, it and is in the one nodule in head area as well. okay. So I would like to call a multidisciplinary team meeting to discuss the management of this lady. That how we go about it. We will call endocrinologist. We will call a senior surgeon, a laparoscopic surgeon, a senior surgeon who is well versed with these cases. And we will also call medical colleagues, medical specialists, and the anesthetist to discuss with. We will discuss the management of this case. Sir, hello. Hello. Osman? रुक गई है Oh, उसकी वीडियो. oh yes, okay. You will call senior surgeon, and multidisciplinary team decided there is a functional tumor in the pancreas, in the head of pancreas, and its size is 3 centimeter. Now, what would you do now? What is the surgical options? So again, I would like to refer this case to a senior surgeon or a tertiary care hospital for surgical management of this patient. The option we have is the ideal option should be enucleation of the tumor, that we remove the tumor without disturbing the pancreatic duct and the structure of the pancreas. But I would like to refer her to the tertiary care center for that. Okay, what medication would you like to give if patient is having, you are till the time patient surgery is not being performed or it is not possible? Can you control this with medication as well? Uh, Sorry, medication is key. I don't remember. Okay, thank you very much. Yes, thank you. कौन सी मेडिकेशन है यार इसमें? डायजोक्साइड है सर, एक इवेरोलिमस है, अच्छा, और ये क्या सोमेटोस्टेटिक एनालॉग्स हैं। क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? सर ये तो हमें भी नहीं पता आप क्या करती हैं जो ना, ये मेरे ख्याल इंसुलिन सेक्रेशन को कम करती हैं ना अच्छा, सर। और और इसमें कोई इसमें, इसकी और इस डायग्नोस, इसकी इन्वेस्टिगेशन में और कोई चीजें हैं या मिस जी हैं? सर, ये लोकलाइज करने के लिए ना इसको, ये तो बहुत ज्यादा ट्यूमर होते हैं, और अगर ये फंक्शनल है तो ये ना SRS कहते हैं, सोमेटोस्टेटिन स्किंटिग्राफी ना, रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्किंटिग्राफी होती है उसको लेबल करने के लिए। अच्छा, जी सर। और इसके एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड बताना चाहिए इसमें आपको, जो ना ठीक है, CT पे इतना नहीं पता चलता इसके बारे में। ये जो गट कट, ये जो पेंक्रियाज वाले ट्यूमर है ना, जितने भी स्मॉल ट्यूमर ऑफ पेंक्रियाज, इसके लिए एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड काफी बेहतर चीज है ठीक लोकलाइज है, करने के लिए। फिर पेंक्रियाटिक डक्ट को आपने लाजमी देखना है, MRCP करानी है कि अगर ये पेंक्रियाटिक डक्ट सा तो नहीं हो रहा। और सेकेंडली, इसमें दो तरह के ट्यूमर है कि सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के लेफ्ट पे है या राइट पे है ना, अगर लेफ्ट पे है तो उसको आप डिस्टल पेंक्रेटेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंसुलिनो में ना जगह जगह फैले हुए होते हैं ना,
अब गैस्ट्रिनोमा है ना, वो सिर्फ उधर पड़ा होता है, गैस्ट्रिनोमा ट्रायंगल में ज्यादा होते हैं। ये इंसुलिनो में जो है ना, ये जगह जगह पड़े होते हैं, तो ये इनमें लोकलाइज करना इनको जरा मुश्किल होता है। और बाकी सर शफकत कुछ आप ऐड करेंगे इसमें? आपको सर वो बताना चाहिए था इसमें, लोकलाइजेशन टेक्निक्स हैं इसकी ना, पेट स्कैन है इसका इसके लिए, और डिफिकल्ट है ये, मतलब इसको लोकलाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको लोकलाइज कैसे करेंगे आप, कौन सा फंक्शनल है और कौन सा नॉन फंक्शनल है। अच्छा अच्छा, पेट स्कैन भी है साथ, ये अपना रेडियो क्या बताया, रेडियो सिंटिग्राफी, रेडियो न्यूक्लियर। सोमेटोस्टैटिन लेबल्ड स्किंटिग्राफी, SRS। ठीक है, स्मेटोस्टेटिन लेबल सिंटिग्राफी, ठीक है। ये उस तरह के न्यूक्लियर मेडिसिन के कुछ टेस्ट है सारे ना, रेडियो लेबल्ड। इसमें ना एंडोक्राइन में ना ये पेट स्कैन जरूर बताना है सर लोकलाइजेशन के लिए, खासतौर पर फंक्शनल ट्यूमर है ना, क्योंकि जब तक आप लोकलाइज नहीं करेंगे ट्यूमर तो बड़े होते हैं, और ये इसमें बड़ा खर्च, बड़े मुश्किल से ट्यूमर है, मतलब किसी में गैलियम लेबल्ड सीटी स्कैन है, तो किसी में जो है ना इटोमिडेट लेबल्ड है, कार्बन लेबल्ड है, गैलियम लेबल्ड है। तो बस पेट स्कैन का तो मोटा मोटा जिक्र करें, अगर ज्यादा फिर वो चूतिया होगा तो फिर पूछ लेगा कौन सा लेबलिंग करनी है ना इसमें, जिस तरह गोटा टैट स्कैन है। ठीक है। और बाकी इसमें फिर इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट तीनों चारों की ना एक ही है, ये गैस्ट्रिनोमा भी PRRT कहते हैं, पेप्टाइड रेडियो पेप्टाइड रिसेप्टर रेडियो न्यूक्लियोटाइड थेरेपी है एक, कीमो एम्बोलाइजेशन है इनकी, उसके बाद रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी इनकी है, और ड्यूडेनम में अगर है तो वो KSM अगर है तो हम कर लेते हैं। ड्यूडेनम के अंदर भी होते हैं ये, जिस तरह गैस्ट्रिनोमा है, बेसिकली दो ज्यादा है ना, ये इंसुलिनोमा और गैस्ट्रिनोमा। ठीक है। तो ये बस यही है कि कट ऑफ लाइन इनकी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर से बड़े होंगे तो ई न्यूक्लिएट करेंगे इसको, अगर सिम्टम दे रहे हैं तो। ठीक है, दो और अगर सेंटीमीटर से सिम बड़े हैं अगर तो, जी सर। और तो छोटे सर हैं तो। छोटे हैं और नॉन सिम्टोमेटिक है तो कुछ नहीं करेंगे मेरा ख्याल है। ठीक है। और इसी तरह अगर पेंक्रेटिक डक्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो वो भी जो है ना रिस्की है, उसको भी निकालना ना मुश्किल होता है। इसका बस आंसर यही है कि मैं इसको एंडोक्राइन सर्जन को रेफर करूं, पता नहीं अब ये, अब हर चीज को ही रेफर करेंगे तो फिर एग्जाम में क्या बताएंगे। नहीं, बस उसने कहा तो फिर बताएंगे, वरना तो रेफर ही करेंगे, उसने रेफर पे मान लिया तो सर फिर। शफाकत इसके बारे में क्या ख्याल है सर आपका? Start with इसका scenario था ना, the patient presented with the sweating, palpitation, headache, and symptoms improved by food intake. So I think I felt the time too much time was taken to reach the diagnosis, unless the examiner uh, told the candidate that symptoms are every time he सर यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर dextrose. पुअरली ऑडिबल। So So the symptoms, this patient had symptoms of headache, sweating, palpitation, and symptoms are improved by taking food, by the food intake. So I felt that I think more time was taken to reach up to the diagnosis, unless the examiner gave you the hint. The patient has her symptoms improve with the IV with IV dextrose, and then she is having a hypoglycemic episode. I felt initially it's a Whipple triad, so the symptoms of hypoglycemia rapidly improved by food intake. So the Whipple triad, that comes in the diagnosis. Obviously, you can ask whether the patient is diabetic is taking insulin or not. That is a differential diagnosis. So यस सर वन शुड once you have pick up the diagnosis, this is the insulinoma probably. So the next would be to confirm the diagnosis. The confirmation is 72-hour monitor fasting, in which you are keep the patient for NPO and serially take the samples for the blood sugars. So if it's less than 50 milligram per deciliter, and the reproduction of the symptoms, and then the prompt relief with taking the glucose, so that confirms the diagnosis. It's a insulinoma, and along with the C peptide, insulin and C peptide, वो कराएंगे तो आपको हो जाएगा. The next is localization. CT scan, yes, but these are very small tumors. Most of the time, they're isolated, solitary. If there are multiple tumors, so think about the MEN syndrome.
उसमें मैन के अंदर होते हैं जो मल्टीपल्स होते हैं, अदरवाइज ये सिंगल आइसोलेटेड ट्यूमर होते हैं, स्मॉल लेस देन 2 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, तो अगर नहीं ऑक्यूटाइड स्कैनिंग है, उसके आप उसको लोकलाइज करते हैं। जब आप इवन आप जाते हैं पैराऑपरेटिवली, तो यू नीड इंट्राऑपरेटिव अल्ट्रासाउंड टू लोकलाइज द लीजन, और पैराऑपरेटिवली how will come to know that yes you have resected the insulinoma, वो किसे पता चलेगा? दिस इज स्मॉल नड्यूल है। सो यू गेट द ब्लड शुगर, आपने किया इमीडिएटली, सडनली आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर आ जाएगी, उसी वक्त आप ब्लड शुगर चेक करेंगे तो आपकी ब्लड शुगर पेशेंट भी ठीक हो जाएगी, जो पहले उसकी ब्लड शुगर ऊपर ही नहीं आती, हाइपोग्लाइसीमिया रहता है पेशेंट जो है ना। और एक और चीज, जो पैंक्रियाटिक डक्ट कितनी क्लोज होगी तो आपने इनिकुलेशन नहीं करनी, जो आपने यू नीड टू चेक इनिकुलेशन करनी है तो उसके लिए आपने ये जरूर देखना है कि ये पैंक्रियाटिक डक्ट कितनी क्लोज है। आई थिंक इट्स 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर उसके क्लोज है तो आप यू विल नॉट गो फॉर द इन्यूक्लिएशन, बाद में पैंक्रियाटिक फिस्टुला बनने के फिर वो चांसेस, अदरवाइज आपके जो लेफ्ट साइड पे है तो उस पे तो डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी यू कैन डू इट, डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी टेल के अंदर पड़ा हुआ, अदरवाइज यू कैन इन्यूक्लिएट इफ इट्स मोर देन 2 मिलीमीटर फ्रॉम द पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो ये चीजें जो है, बाकी उसके ऑब्वियसली आपके जो दूसरे मेडिकल ट्रीटमेंट्स ने बता दी है, ऑक्यूटाइड, दीज आर न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर, न्यूरो एंडोक्राइन जितने भी ट्यूमर्स हैं उनके क्या सोमेटोस्टैटिन जो रिसेप्टर्स हैं सब पे ऊपर होते हैं, इसी वजह से सोमेटोस्टैटिन रिसेप्टर सिंटिग्राफी होती है, वो बॉडी में कहीं पे भी न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के अंदर इनकी जो लोकलाइजेशन इसके साथ ही, क्योंकि रिसेप्टर इनके पे ये होते हैं। ठीक है। ठीक है सर, तो ये है। और अगेन लेपोस्कोपी किसमें है, इन्यूक्लिएशन, लेपोस्कोपी के लिए आप यू कैन विद द हेल्प ऑफ द लेपोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। अब सर इसमें एक सवाल मेरा ये है कि ये ऐसी चीजें ना, ये ओपन भी कभी नहीं देखी हुई हमने ना। ये मैंने एक पेशेंट ना मैंने किया था, वो पेशेंट आया था, बेसिकली मेडिकल स्पेशलिस्ट रेफर किया था, for the last 25 years that patient was having a repeated episode of hypoglycemia with prompt relief by taking the food intake। वो कहता है मैं मस्जिद नमाज पढ़ने जाता था, सजदा करता उधर ही मैं जो ना हो जाता, बेहोश हो जाता था बिकॉज ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, और मॉर्बिडली ओबीस था क्योंकि वो खाना खाता बार बार, उसकी ब्लड शुगर ऊपर नहीं आता, और सीटीपी उसका था मेरे ख्याल 2 सेंटीमीटर का था, जो उस पर लियन पिक हुई थी उसका। मैंने आई वेंट फॉर द लेप्रोस्कोपिक, उसमें 30 डिग्री मेरे पास था नहीं, जो है ना हमने उसमें चले गए, ग्लासेस पैक में चले गए, लेकिन उसके बाद ना 0 डिग्री से विजिबिलिटी को पता नहीं चलता, फिर मैंने ओपन किया उसको, ओपन करने के बाद उसको निकाला, निकालने के बाद हमारे अल्ट्रासाउंड तो नहीं था इंट्राऑपरेटिव, तो साथ ही ब्लड शुगर उसी वक्त देख लिया तो वो नॉर्मल होगी, उसकी ब्लड शुगर ही ऊपर 200 पे चली गई। तो पोस्ट ऑपरेटिवली अब उस अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है पेशेंट ना, वो दोबारा कर नहीं, वो नोड्यूल जो है वो फील होता था पोस्ट ऑपरेटिव पैंक्रियास में। पेशेंट डेवलप पैंक्रियाटिक फिस्टुला, उसका हो गया फिस्टुला डेवलप हुआ, उसको फिर हमने कंजर्वेटिव करते रहे, उसका टेस्ट कराया सारा, फ्लूइड का चेक किया कि कौन सा माइलेज और बाकी चेक कर, वही जो तरीकाकार है पैंक्रियाटिक फिस्टुला ऑक्यूट्राइड उसको देते रहे। प्लान था कि हम इसका करें कि पैंक्रियाटिक जो है ना ईआरसीपी कराएं और पैंक्रियाटिक जो डक्ट उसकी स्टेंटिंग हो जाए, स्टेंटिंग कर दें। लेकिन वो जो डेट हमने मिली वो इतनी लंबी थी ना, बाय द टाइम फिस्टुला वैसे ही लोग, और पेशेंट वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अभी, बल्कि मुझे मैसेज आते होते हैं उसके ना। ये तूने उसको लोकलाइज कैसे किया? सर लोकलाइज हुआ था ना, मेरे पास जो है ना सीटी के साथ आया था ना, सीटी के साथ आया था, और उसके बाद सीटी के ऊपर आई थिंक 2 सेंटीमीटर का था, लेस देन 2 सेंटीमीटर ना, किस जगह पे? किस जगह पे? टेल ऑफ द पैंक्रियाज, अच्छा, टेल और तो बॉडी पहले के दरमियान। आराम से मिल हाँ आपको आराम से क्या पड़ा? हाँ, पड़ा पहले आराम मैंने से? लेवल स्कोप मैंने डाली ना, लेसर सैक में चला गया, लेकिन उससे 0 डिग्री फिर वो विजिबल 120 वो था, विजिबिलिटी नहीं होती और मेरे पास नहीं थी वो, तो फिर मैंने उसको ओपन में कन्वर्ट किया, जो ओपन में कन्वर्ट किया तो फिर मिल गया था मुझे, अच्छा। तो वो वो निकाला, दाना क्योंकि एक्सरसाइज किया वो इतना ही छोटा सा नड्यूल था, बिल्कुल स्मॉल नड्यूल। अच्छा, मतलब नजर आ रहा था उसमें आराम से, मतलब हाँ वो थोड़ा सा पैंक्रियास। ऐसे ना प्रोजेक्शन थी ऊपर ना, तो लग रहा था कि यार अच्छा। ये फिंगर जो पैल्पेट किया, बाकी हम्म, सीटी का देखा किस लेवल पे पड़ा हुआ है, तो उसको देखते हुए हम्म। वहीं पे था भी, इंटीरियर उस पे था ना, पोस्टीरियर नहीं आपने था। उसके लिए स्किंटोग्राफी वगैरह नहीं कराई, वो जो है ना नो नो ऑक्यूटाइड? नो 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 नो, कोई नहीं कराई। हम्म, तो वो हम्म, उसको निकाला, साथ ही ऊपर आप हमने उसका कर लिया,
ब्लड शुगर उसी पर ग्लूकोमीटर पे चेक की तो वो 200 के ऊपर थी, 250 बल्कि थी उस वक्त। तो पोस्ट ऑपरेटिवली इसी तरह 200 इस तरह ब्लड शुगर उसकी चल, तो अल्लाह का शुक्र वो ठीक वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया। तो ये है कि ये इंसुलिनोमा जो है ना, फिर उस पर बल्कि केस रिपोर्ट भी उस पर बनाई थी उसने ना, तो ठीक हो गया। तो चलें सर, लास्ट वन अब आप पूछेंगे सर, मेरी बारी है जवाब देने की। अच्छा, 40 years old lady uh, comes to you in OPD with the complaints of generalized body aches and lethargic feelings for the last 4 months. ओके She has been repeatedly visiting OPDs and taking painkillers and going back and then coming again. She looks a little depressed to you. How will you proceed with this case? Okay, so these are non-specific symptoms. So I will take the detailed history from the patient. So the say the duration of the symptoms and what is the previous workup has been done or not, and then I will go with the systematic. I will explore the previous record of the patient. So is there any workup previously has been done or not? Just the baseline investigation like blood CT and RFTs, which were all normal, and she's not improving with medication, and What medication she is taking? she's just taking these painkillers like Panadol, Nubrol, and NSAIDs off and Okay, on. then okay, these are non-specific symptoms. So I will discuss with the medical specialist. So after taking the history, and because these are non-specific symptoms, so she's having fatigue. You said fatigue and Yes, body aches, body aches, lethargy. lethargy. Okay, so I will after taking the detailed history and performing the physical examination. So I will this involve the medical specialist in this patient and send this patient to the medical specialist. Okay, so medical specialist sees the patient and then again sends to you suspecting some surgical cause, and Okay, he has diagnosed that she has recent onset of diabetes and hypertension. So what? How will you investigate this diabetes patient? and hypertension. Okay, so there's a diabetes and hypertension as well. Then I will think about the metabolic causes in this patient. Uh, for example, hyperparathyroidism or some other causes like pathology related to adrenals. So I will take the history again. I will go back to the history and explore the other symptoms, associated symptoms, in addition to these symptoms. Are there any symptoms related to the Cushing syndrome, Cones, or the symptom related to hyperparathyroidism? Okay, so how will you investigate? The symptoms are likely It's a symptoms point to some adrenal gland pathology. So I will ask, look during the examination and history as well. Look for is there any hirsutism, acne, abdominal stria. These are sign symptoms of the pointing toward the Cushing syndrome. So obesity, what is the physical appearance of the patient? So, Okay, so and is there any signs which are pointing toward the Cushing sign and symptoms? yes, she has obesity and she has hirsutism, and she Okay, has recent onset diabetes and hypertension, as I've told you. okay. So So then, how will you yes, proceed with the investigations? okay, then would like to confirm the diagnosis. So the first step would be getting a slightly cortisol, the two measurements along with the urinary 24-hour urinary cortisol measurement, 1 milligram dexamethasone overnight suppression test, and ACTH level. So I would like to review these investigations, and I would like to know whether the patient is already taking the steroids or not. Okay, so cortisol levels were elevated and ACTH levels are also elevated, and patient has not been taking any steroids. Okay, What will be the next step? ACTH level is raised. Yes. Okay, so that means it's a pituitary dependent. It could be pituitary dependent ACTH. Or it's a pituitary independent ACTH related to the Cushing disease.
So then I would they ask the patient whether they're having patient symptoms like diplopia or which are the signs with pituitary adenoma. And I would request for the MRI of the brain along with the afterwards inferior petrosal venous sampling. So after involving the endocrinologist. Well, the MRI is normal and the sampling is also normal. So Is what MRI next? is not MRI is normal. Okay, so the MRI is normal. Then the pituitary, there's no pituitary pathology. Then I would look for there is any ectopic production of this ACTH. So I would go for the history again, looking for the whether the patient having any sign symptoms related to the lung cancer or other and neuroendocrine tumor, so which is producing this ACTH. So I would like to get the contrast and CT scan of the chest, abdomen, and pelvis after ruling out the whether the patient is ruling out the pregnancy Okay, so CT scan just shows a mass in the right lung. in the right lung. Okay, so I would like to see what is the size of the lung, size of this lesion. Well, it is Is in it the single? single mass in the lower lobe, about 5 by 3 centimeter in size. So then I will consult the thoracic surgeon. So the patient will be required the management by the thoracic surgeon and the multidisciplinary team meeting. Okay. And Okay, so we changed the scenario. Her ACTH levels were not raised and cortisol levels were elevated. So what will you do next? the cause could be the one we have already ruled out. It's not because of the steroid. She is not taking any steroid, including the inhaled steroid as well, right? Yes, yes. Okay, so that means the pathology is in the adrenal. It could be because of the adrenal hyperplasia, or there could be adenoma or the carcinoma. So then I will get the contrast and CT scan of the abdomen to see the adrenal gland. Okay. So is As there any lesion? Yeah. yes, it shows a lesion about 6 centimeter in size in the right adrenal gland. So what is the now I would like to see whether I will discuss with the radiologist whether any suspicion of malignancy. It's a 6 centimeters, a borderline, but I would like to know what is the hormone field density of this lesion, and is there any local invasion, any He mets says present or not? he says that there are no malignant features. No malignant features. So, the other adrenal gland is fine. So there's no pathology on the other gland. Yes, other gland looks normal. It looks normal. So now that confirms that it's adrenal adenoma. The lesions on the right side with the 6 centimeters. So I will take the patient in the multidisciplinary team meeting. We get the input from the endocrinologist, and the next step would be we will offer the patients a adrenalectomy for this patient. Okay, so how would you prepare how would you prepare her for surgery? So these patients, they're because she's a diabetic, hypertensive, and these patients are at risk of developing a DVT as well. So this patient requires the optimization. So I will take the input from the internal medicine and for controlling of the diabetes and hypertension. And this patient requires the broad spectrum antibiotic at the time of the surgery and the DVT prophylaxis. And she will require the stress dose of the steroids at the time of the surgery. And in addition to these, Okay, the and patient requires the other investigation for the pre-incident assessment. okay, and what surgery are you offering her? So if there are no features of the malignancy, no local invasion, I would go for the laparoscopic adrenalectomy. I will just seek the other colleague who is doing laparoscopic adrenalectomy on a regular basis. So I will get his help as well. So we will go for the laparoscopic adrenalectomy. Okay, and you have done the surgery. Important things, what important medication will you give in post-op period apart So from antibiotics and painkillers? So the patients require the steroid replacement. So the initial phase, in the form of the intravenous route, hydrocortisones, and afterwards he will require the replacement therapy because the opposite adrenal gland is suppressed, and we will continue the hydrocortisone till the recovery of the
opposite adrenal gland. Okay, and how would you know that opposite adrenal gland has recovered? So it's a synthesis test, which is a suppression test. We see whether the ACTH has been recovered or not. So it's a dexamethasone suppression test. Okay, thank you, Shaukat bhai. Thank you, sir. So now the feedback, sir. अच्छा यार, तेरा नॉलेज अच्छा है माशाल्लाह. उस्मान बताएं भी पहले. सर नहीं माशाल्लाह सर तो टॉप कर रहे हैं. नहीं टॉप वाली सर नहीं की वजह बात. नहीं रियलिस्टिक सर की फीडबैक है. हाँ मैंने सर असल में आखिरी टाइम सुना नहीं. आपने हाँ. लेप्रोस्कोपी का क्या बताया कि लेप्रोस्कोपी जो है ना मैंने कहा था कि I will seek the help. I will look for the experienced laparoscopic surgeon who has experience of doing the laparoscopic adrenalectomy. I will involve him and we will offer him laparoscopic adrenalectomy. वैसे 6 सेंटीमीटर बड़ा ट्यूमर है, इस पे लेप्रोस्कोपी खैर की जा सकती है, लेकिन यस अच्छा इसमें हमने ये कब हमने कहना है कि आई विल रेफर दिस पेशेंट टू जो है ना हायर सेंटर. इसका मुझे अब तक ये जवाब नहीं मिला कि जो है ना हायर सेंटर में अगर वो कहे कि जी आप हायर सेंटर में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सेफ सर्जरी का क्या कॉन्सेप्ट है. ये अब सारी चीजें ऐसी हैं कि assume yourself you are in the higher center but get the help from your colleagues. आप समझेगा आप you have the endocrine surgeon at institution, you have the pediatric surgeon, every specialty is available. तो आप उनको बताएं, बुलाएं ना. अगर वो कहते हैं yes he is not available, so then the scenario changes. ठीक है. तो आप उसमें समझेंगे आप एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं. एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल में बैठे हुए ना. यहाँ पे सारे अवेलेबल है. मेरा तो यही है. बाकी सर नुमान के बंदे, सर नुमान का क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल है पहले आप उसको जब ट्रीटमेंट आए तो उसको ट्रीटमेंट बेशक बता के लेकिन मैं खुद नहीं करूंगा, मैं इसको रेफर कर दूंगा. तो फिर अगर वो कहता ना कि नहीं आप नहीं है, तो फिर भी आप कहें कि मैं किसी सीनियर की मौजूदगी में ये करूंगा, उसको असिस्ट कराऊंगा. तो नहीं सर, अगर आप अपने आप को ज्यूम करते हैं यू आर सिटिंग इन द टर्शरी केयर हॉस्पिटल और वहीं पे कुलीग सारे हैं, तो रादर देन ये रेफर करने हायर सेंटर बोलने के बजाय आप कहेंगे कुलीग को हैंड ओवर कर देंगे. जिस तरह आपने मेरा तो ख्याल है ये एज्यूम ना कर, जितने पिछले लोगों ने बताया ना, जो मिजान ने भी, सरवैस ने भी, और ये तो इन सारों ने रेफर ही किया, इन सारों को रेफर किया. ठीक है, राइट. उसने कोई आगे बात उसने नहीं कोई बात नहीं की. उसने तो ठीक है कि ठीक है, तो ठीक है, रेफर को बोल देंगे. अगर वो कहता है कि नहीं रेफर नहीं करना और आप बताएं क्या करेंगे, फिर मेरा ख्याल है आगे बता दे. देन यू हैव टू एक्सप्लेन. हां फिर तो बताएंगे जो भी आपने करना होगा. क्योंकि अब इसमें मुझे ज़हन में हमेशा ये सवाल रहता है. ये इसको मैं बंद कर दूं इस रिकॉर्डिंग को फिर? हाँ इसको बंद कर दें. ठीक है, ओके, आई एम गोइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग.